ओके, फिर आगे बढ़ते हैं. So we have done this last example where we were trying to find the approximate number of typos per single line. Okay, so आगे बढ़ते हैं. Now we have an exponential distribution. Another distribution that we will talk about is exponential distribution. So exponential distribution is actually measured against time. So जब भी आप exponential distribution की बात कर रहे हैं, you're trying to see some kind of a change in some variable over time. Okay. Now it's also sometimes called as a negative exponential distribution. जैसे मैंने यहाँ लिखा है, it's called a negative exponential distribution as well. Okay, so it's also called a negative exponential distribution. Sometimes referred to as a negative exponential distribution as well. And the distribution generally looks like this. So for example, एक बहुत simple सा example that you can think of is performance of the transmission of a car. या in general अगर car का performance देखेंगे, over the years how car will perform when you buy it versus when it will perform at the end of the time is, you know, it will sort of, अगर आप सिर्फ acceleration की बात करें, right, you'll see the change in acceleration of a two-wheeler or a car as it starts to increase, you know, the life of the car or that particular vehicle that you're talking about. So अब अगर जैसे transmission का example मैंने यहाँ दिया है, तो let's say it is being measured on a scale, right, which is some kind of a scale based on its performance. As we move ahead in time, you will see that the performance declines, and after a while it will stay the same till it sort of, you know, बिल्कुल जब तक transmission पूरा बैठ जाएगा और गाड़ी बंद हो जाएगी. But it sort of starts at a high point, starts going as you increase the time period, and then it declines and stays stagnant for some time, and then eventually it tips off. Right? Exponential distribution generally will not tip off, right? It will go straight. It will mostly be parallel to time t, right? But वो parallel जो है वो भी एक time पे आके मतलब वो ऐसा दिखेगा. अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे time period पे देखोगे उसको, तो it might look something like this. Right? So ये parallel लग रहा है, but at some point of time it will fall back to zero, right? So now, like I've said, exponential distribution helps us to model time and can be used to answer questions like how much time will go before a major hurricane hits Atlantic seaboard, right? This is also again exponential distribution. Okay, अगर कोई hurricane hit कर रहा है, right? So it will start with a particular intensity and then it will go down. And even when you're looking at कितना time लगेगा उसको hit करने में, तो पहले तो वो एक hurricane का एक indication आता है, right? Wind start blowing and everything, right? So it will start again from a smaller point. You know, maybe it will start something like this over here. अगर मैं उसको measure कर रहा हूँ, and at one point of time it will start behaving like a exponential distribution, right? So sometimes normal distributions also behave like exponential distribution, right? कैसे हो सकता है ऐसे? अगर आप एक normal distribution देख रहे हैं इस तरीके से, and it starts behaving in a way like this, right? And the main constraint is that you're measuring it against a time interval, right? अगर वो time नहीं है and you're measuring something else, then it is not an exponential distribution. When you're measuring it against time, essentially, then that's when we call it a exponential distribution. और दूसरा है how long the transmission of my car lasts before it breaks. Okay, so ठीक है, इसको note down करो. क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आप वैसे नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जब आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो, लिसन अप, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जब आप बात कर रहे हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप रैंडम वेरिएबल x की बात कर रहे हो, और यहाँ पे आप उसकी फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप टाइम की बात कर रहे हो. सो यहाँ पे आप रैंडम वेरिएबल को मेजर नहीं कर रहे हो, रैंडम वेरिएबल इज बीइंग मेजर्ड ओवर हियर. तो वो अगर आप उसका मीन कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियसली उसका मीन भी जो है वो डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग दिस लाइन इज, इट विल
affect the mean. क्योंकि अगर आप मान लो यहीं तक मेजर कर रहे हो सर इस टाइम इंटरवल, तो आप किस टाइम इंटरवल में मेजर करते हो वो उस हिसाब से मीन चेंज हो. अगर आप मीन से इस टाइम इंटरवल तक मेजर कर रहे हो तो मे बी द मीन विल बी समथिंग ओवर हियर. बट अगर आप टाइम इंटरवल एलैबोरेट कर रहे हो एंड सिंस योर स्मॉल मेजरमेंट्स आर इंक्रीजिंग, राइट, सो इस इस वाले स्केल पे ही आपके बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं, तो ये मीन जो है ये शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लोअर वैल्यूज. इट प्योरली डिपेंड्स ऑन व्हाट इज टी जब आप मेजर कर रहे हो द एवरेज ऑफ दिस दिस पर्टिकुलर वेरिएबल. ओके, ठीक है, क्लियर. चलो नोट डाउन करो इसको क्विकली. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, एंड इट आल्सो मेजर्स टाइम बिटवीन पॉइजन प्रोसेसेस. सो पॉइजन मतलब अगर आप अलग अलग इंटरवल्स उठा रहे हो, जैसे मान लो ये इंटरवल है, ये इंटरवल है, ये इंटरवल है, तो एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल के बीच का जो टाइम है वो टाइम का मेजरमेंट जो है वो हम लेते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. एंड व्हेन यू कंबाइन मल्टीपल intervals along with the time, then you see a exponential distribution. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई क्वेश्चन था एग्जाम में? हाँ, एग्जाम नहीं, जो असेसमेंट आपका हुआ था. क्यों? नहीं, हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो आपने तो पेपर देखा होगा तो मतलब यू गाइस सॉ फर्स्ट टू क्वेश्चन, उसके बाद लगा तो हाथ खड़े कर दिए. ऐसे नहीं करना चाहिए यार. यू शुड नेवर डू दैट. मैंने आपको पहले ही बताया एग्जाम में हमेशा यू विल हैव टफ क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चन. अगर आपको एग्जाम सिर्फ पास करना है, यू कैन इवन लुक एट सिंपल क्वेश्चंस एंड आंसर देम, पास द एग्जाम. हर एग्जाम इसी तरीके से डिजाइन हुआ जाता है कि इंटरमीडिएट, इजी एंड हार्ड क्वेश्चंस होते हैं. अगर आप इंटरमीडिएट और इजी भी करते हैं तो भी आप डिस्टिंक्शन ला सकते हैं. Hard questions are for those people who go an extra mile, who will, who understand the concept really well, या जिन्होंने पढ़ा है या जो अप्लाई कर सकते हैं, right? So that is where the distinction between each student comes in. But अगर आप पहले तो क्वेश्चन देख के सोचोगे अरे यार ये क्या है, तो फिर एग्जाम फिर अटेम्प्ट करने का मतलब नहीं है ना. यू शुड एटलीस्ट गो थ्रू द पेपर वंस. जो जो आपको थॉट्स आ रहे हैं वो नोट डाउन करो क्वेश्चन के अगेंस्ट एंड ट्राई एंड सॉल्व व्हिचएवर यू कैन. जब इन क्लास एक्सरसाइज करेंगे तो हो सकता है उससे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिले. दैट विल इम्प्रूव इट.
Okay, guys. Okay, so probability density function for a exponential distribution is given by this formula. PDF is given by P of X for a random variable X is M e raised to the power minus mx, where M is the decay parameter. So, एक example है, let's say, let X be the amount of time in minutes a postal clerk spends with her customers. Okay. Now, the average time that this person spends is about 4 minutes. Now, what we have to find out is that, let's say, if we are talking about X equal to 5, right? I mean, that means basically we are trying to determine what is the probability that he'll end up spending 5 minutes with each customer, right? So उसके लिए हम लोग Poisson distribution का Poisson बोल रहा हूँ exponential distribution का use कर सकते हैं. So f of x m e raised to the power minus x is given by decay parameter is 1 upon mu. So decay parameter यहाँ पे मैंने लिखा है, हाँ, decay parameter is 1 upon mu. So decay parameter is basically the rate with which this thing is falling, right? So this is basically the decay parameter कि जो आपका measurement है वो किस rate से fall कर रहा है. That is what is given by m. How do you calculate that? That's given by 1 upon average of the random variable x or 1 upon mu. तो average time आपको दिया गया है 4 minutes. You'll be able to calculate the decay parameter, which will be 1 upon 4. Now, once you have a decay parameter, you have e का value, you have m का value, x आपको find out करना है equal to 5, right? So you just substitute that in the formula and calculate the value to be 0.072. So the probability that the person ends up spending 5 minutes with each customer is that's 0.072. Very less probability. So ये हम ऐसे measure कर रहे हैं, जैसे अभी मुझे पता है कि इस point पे वो कितना time spend करेगा. Right? This is what I'm trying to determine. I can determine even more ki how much time he will spend. What is the probability that he'll end up spending 10 minutes with each customer? So that can be determined by this, right? And again, this value is what? This is time. And this is the probability that we are measuring of spending that time with each customer. Okay, that's something that you can calculate for different values of x. अगर आप अलग-अलग values calculate करोगे and you plot them on a graph, you will see that it will come out. अगर हम अलग-अलग dots represent करें, so it will come out to be like that. So maybe, as a homework, you can try calculating f of x equal to 2 and f of x equal to 10. So ये जब आपके पास 3 dots आ जाएंगे, f of 5, f of x equal to 5 तो है आपके पास. So when you calculate the probabilities against them, put 3 dots, and when you'll see that these 3 dots will look something like this. An exponential distribution. Okay. This is t. This is the probability that he spends that much amount of time. Okay. So we have to basically find out amount of time that he spends with her customers. That's the question. X आपको find करना है, which is the amount of time that he spends with her customers at x equal to 5. क्लियर है? ये इसमें समझ में आया क्या करना है? सिंपल से आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. m e raised to the power minus x. decay parameter कैसे कैलकुलेट करना है? That's 1 upon average, 1 upon mu, whatever it is, and substitute in the formula and you can calculate. कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि what is the probability that the person spends less than 5 minutes with his customer? तो आपको उसके लिए x less than 5 कैलकुलेट करना पड़ेगा, right? 1, 2, 3, 4, 5 and then you add them up. Right, so ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जाम में कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जनरली यू हैव टू फिगर अराउंड दिस क्वेश्चन कि आपका क्या स्टेप होना चाहिए. अगर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया हुआ कि एक्सपोनेंशियल है या नहीं, वो भी आपको खुद फिगर आउट करना. So all these things you need to sort of be aware of.
कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कब लगानी है, पॉइजन कब लगानी है, नॉर्मल कब लगानी है, बाइनोमियल कब लगानी है। नॉर्मल तो इजी है, बाइनोमियल भी इजी है। पॉइजन और एक्सपोनेंशियल जो दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस है, दे आर मेजर्ड अगेंस्ट टाइम। पॉइजन में आप हर टाइम इंटरवल पे एक मेजरमेंट लेते हैं, एक्सपोनेंशियल में वो टाइम चेंज कैसे हो रहा है दो इंटरवल्स के बीच में, आप वो मैप करते हैं। दैट्स बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड पॉइजन। ओके, लेट्स डू दिस एग्जांपल।
आगे बढ़े गाइस। हाँ, नहीं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का होगा कि अगर वो इंसान बुक्स लिखते जा रहा है, राइट, एंड यू आर मेजरिंग लेट्स से टाइपोज ओवर 10 पेज, तो what is the sort of the time interval between the typos that he does? So when he is writing a book, right, ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो ज्यादा टाइपोज करता हो, but eventually when he's into writing and he's completing the book, so that the frequency of typos might reduce, right? So exponential distribution will measure the time interval between these typos. And generally, when somebody is writing it, it can either increase or it can decrease based on the level of expertise of a person. Okay, बढ़े आगे बढ़े, ठीक है. Okay, now let's talk about a uniform distribution. So uniform distribution is also called a rectangular distribution. That is because it actually looks like this. Now, what we mean by this is that the probability for a particular set of random variables is the same, right? So for example, यहाँ अगर आप देखेंगे जो measurement है x की at 1, 2, and 3, the probability of that is same, 0.5, right? It does not change. It's uniform. That's the reason it's called a uniform distribution. Generally, it's defined by two parameters, A and B. A is the maximum, B is the minimum. Okay, so for example, A is where this uniform distribution tapers off, right? जहाँ पे value 0 हो जाती है, the probability becomes 0. And B is where it starts increasing to 0.5, right? So there's a max and there's a minimum value always for a uniform distribution. And how you calculate the PDF for this is simple, 1 upon B minus A. 1 divided by B minus A, and A should be less than equal to X, should be less than equal to B. This is a very important criteria, right? क्योंकि अगर ये B का value A से बड़ा नहीं होगा तो ये negative आ जाएगा, right? So that's, and probability will never be negative. इसलिए ये condition लिखना बहुत जरूरी है that A is less than or equal to X is less than or equal to B. Okay. So simple hai. This is the most simplest of all distributions. Again, like other distributions, the area under the curve will always be equal to 1. How do you measure that area under the curve? Because it is a rectangle, you multiply length and breadth and get the area under the curve. So 0.5 into 2, because 0.5 ये है, 2 ये है, so the area under the curve will be 1. Okay. Okay, इसके बाद example है, so ये note कर लो पहले diagram and the sort of definition of this, and what is the PDF also.
हो गया guys? Okay. Let's look at the example that we have here. The average amount of weight gained by a person over a few months in winter is uniformly distributed between 0 and between 0 and 30 kg. Find the probability that the person will gain between 10 to 15 kg during these months. Okay, so आपको इस चीज का probability measure करना है between 10 to 15 kg.
the amount of weight gained by a person over a few months in winter is uniformly distributed between 0 and 30. So uniform distribution for 0 to 30, you have to measure the probability that it will be somewhere between 10 to 15 kgs. Okay, so what we have to do is you have to simply find the area of the shaded portion here. Okay, so length into height. What is the length? 5. Height is 1 upon 30. Since this is all 30, यहाँ पे अगर हम इसको calculate करेंगे, length into breadth, and we calculate the area under the curve as 1. So this will become 1 upon 30. ठीक है? So हमको ये दिया हुआ है, right? This is 30, so I'll substitute length as 30. So breadth will be 1 upon 30. ठीक है? So ये value आपको मिल गई. Basically ये आपको calculate कर रहा था. This is 1 upon 30. This you already have. Correct? This will be 15 minus 10, which will be 5. So when you calculate the probability, that will be 1 upon 6, which will be 0.16. Okay. If they ask you what is the probability that it will be less than 10, then it will be basically this portion instead of this one. And then you'll calculate 1 upon 30 into 10, which will be 10 upon 30, which will be 1 upon 3, which will be 0.33. So the probability of him gaining between 10 to 15 kgs is lesser than him gaining weight between 0 to 10 kgs. Okay. So ये मैंने आपको सिर्फ एक और example दिखाया so that if question asks less than 30 है, less than 10 है या greater than 20 है, what is the probability of that? अगर आपको calculate करना है greater than 20, तो क्या आएगा उसका आंसर? हाँ? 0.33. That will be 30 minus 20, which will be 10. 10 upon 30 will be 1 upon 3, will be 0.3. So again, the probability of him gaining more weight is relatively more compared to him gaining weight between 10 to 15 kgs. Okay. Okay, let's do this.
Okay, let's move to the next topic, which is central limit theorem. Okay, so central limit theorem क्या suggest करती है that typical cases when you have a big population, right? आपके पास एक बहुत बड़ी population है, and when you draw random samples from that population, तो पहले तो एक चीज है, जो population होगी उसका एक mean और standard deviation आपको दिया होगा, right? And when you draw random samples from that population, you can also check the mean and standard deviation of each sample that you're calculating, right? So let's say mu and sigma are the mean and standard deviation of your population. And when you draw different samples, let's say you draw S1 over here, S1, S2, S3, and Sn, you have different samples that you draw. Each sample's mean is given by x1 bar and let's say sigma x1 bar, right? Sigma x2 bar, sigma x3 bar, and so on up to sigma xn bar. So what central limit theorem suggests is that जब आप ये samples draw करते जा रहे हो, right? So every sample will have a different mean and standard deviation. तो जब आप population में से samples draw कर रहे हो, every sample will have a mean of x1 bar and a sample standard deviation of sigma x1 bar. And as you try to increase the samples, right? And ये samples को जब आप combine करके इनका mean calculate करेंगे, तो वो जो mean होगा that will always be close to the population, right? So mu, which is your population mean, will always be closer to the sum of all the sample means divided by n, which is nothing but the average of those sample means, right? And as you increase the number of samples, the value of this quantity will start approaching this quantity. So maybe जैसे अगर आप पहले दो samples pick करते हो इस population में से, उनका आप mean calculate करते हो, sample mean का mean calculate करते हो, ठीक है? When you calculate the sample mean का mean, you might see that they are not very close to mu. So let's say अगर mu का value is let's say 22, and we are talking about x, which is nothing but age variable. Okay, ये हमारे sample का mean है.
पॉपुलेशन का मीन है, लेट्स से दिस इज म्यू, ठीक है। When I draw multiple samples from this population, तो let's say S1 का जो मीन है वो आया 20, S2 का मीन आया 24, S3 का मीन आया 26। अब जब आप इन तीनों का मीन आपस में कैलकुलेट करेंगे, so that will be 2, 2, 4, 6, 70, 70 divided by 3, 3 to the 6, ठीक है। तो ये आपका सैंपल मीन आ गया फॉर 3 सैंपल्स दैट यू हैव कंसीडर्ड। नाउ इट इज नॉट क्लोज, आई मीन इट्स नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू योर ओरिजिनल मीन, but it is somewhere close to that, right? थोड़ा सा difference है दोनों के बीच में, but it is close. Now, if you include more samples in it, let's say S4, S5, S6, इस तरीके से जब आप more samples include करोगे, मतलब more samples draw करोगे और उनका mean calculate करोगे, you'll observe that as you include more samples and calculate the overall sample mean, your population mean will start getting closer to this mean of different samples that you're taking. राइट, सो उससे क्लियर क्या होती है कि एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ सैंपल्स, these samples put together will start behaving like your population. Correct? Is that statement true or is that statement wrong? That statement is true because हर टाइम जब आप हर एक सैंपल का मीन कैलकुलेट कर रहे हो और उन सब सैंपल्स को कंबाइन करके एक यूनिफॉर्म मीन कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन के क्लोज होता जा रहा है। दैट मींस योर टोटल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सैंपल्स is also getting close to your population distribution. So the idea of central limit theorem is that, let's say if you're working with 1 billion examples, right? अब 1 billion data पे तो आप model train नहीं करोगे. You want to have a sample which is a good representative of that 1 billion population. So what you will do is you will randomly sample observations from it. Let's say you want to have 10,000 observations. So आप, instead of having one random sample of 10,000 observations, what you will do is you will take multiple random samples with 100 each, right? Let's say 100 samples ले लिए with 100 values in each sample. That will be a better representative of your population than taking one sample which is 10,000. So that is the idea behind central limit theorem. Now I'll sort of read out what this says. So central limit theorem states that as we increase the number of samples and calculate mean against them, the overall mean of samples will get closer to the original population as we keep on drawing more samples from the population. Okay, so that is the idea, right? As you increase the number of samples you draw, your sample space will start coming closer to what your population looks like. And how to estimate that? That can be estimated using mean. अगर आपका multiple samples का mean जो है, that is very close to your population mean, then you can say, okay, right? I mean, they are both behaving in a very similar. So central limit theorem का basic फंडा वही है. Okay, so इसको लिखते हैं.
करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही डील करती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगी तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करती है, एक्सपोनेंशियल यूनिफॉर्म उन केसेस में अप्लाई नहीं करती। Okay, आगे बढ़े. Okay, so now we have to talk about two things, in terms of how distribution looks like, especially the normal distributions. So that is called skewness and kurtosis. Skewness and kurtosis. So skewness का मतलब ये होता है कि जब आपके पास एक distribution है, right? And distribution has outliers, lot of outliers. If the distribution has outliers on the upper extreme, right? So let's say ये 0 है और आपको ये random variable measure कर रहे हैं. अगर आपके outliers upper extreme पे है for higher values of x, तो आपकी distribution कुछ इस तरीके से दिखेगी. This means that there are values present for x, for higher values of x. There are values present, but there are very few values present there, right? क्योंकि अगर आप इसको प्लॉट करके देखोगे तो f of x या frequency of x या probability of x for x greater values is very low, right? यहाँ पे it looks okay, यहाँ तक भी it is fine, but since it is getting a long tail here, that means for extreme values of x there are some values present which can be termed as outliers. इस वजह से आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें you see a long tail towards the right end, towards the extreme values of x, and this is termed as a right skewed distribution. Okay, so जहां पे भी आपको टेल ज्यादा लंबी दिखेगी या जहां पे जिस साइड पे भी ज्यादा आउटलायर्स होंगे उसी साइड की स्क्यूनेस हम लोग बोलते हैं कि द स्क्यूनेस इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स दिस साइड. अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, फॉर अ राइट स्क्यूड डेटा, ओके पहले लेफ्ट स्क्यूड में जाते हैं. लेफ्ट स्क्यूड इज द ऑपोजिट ऑफ राइट स्क्यूड. सो अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में लोअर वैल्यूज के लिए काफी ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज है, so for lower values of x there are a lot of values present, right? ये जो lower values है x का, अगर मैं इस रेंज की बात करूं यहाँ पे काफी सारी values, right? f of x of p of या फिर probability of x. Basically अगर हम frequency measure कर रहे हैं तो there are values, lot of values for the lower values of x. But as I go along this distribution, I see that the values tend to become a normal distribution, especially in this space. Right now, this also suggests that there are outliers, but on the lower end. So ये जो tail है, ये भी left की तरफ ज़्यादा है, outliers भी left की तरफ ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग इसे left skewed कहते हैं, right? Now, in case of a right skewed, अब क्या लगता है, mean greater होगा या median greater होगा?
अगर if you compare mean and median with each other, what will be greater compared to the other one? इस केस में राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मीन ग्रेटर होगा या मीडियन ग्रेटर होगा? प्रेरणा और प्रियंका आंसर नहीं करेंगे. थिंक अबाउट इट. किस केस में? राइट स्क्यूड में करेक्ट, मीन ग्रेटर होगा, राइट? क्योंकि आपके पास अगर आउटलायर्स है एक्सट्रीम वैल्यूज पे, एंड इफ यू कैलकुलेट मीन, सो लेट्स से ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है 1 2 3 4 5 एंड 1000, जो मैंने एक पहले आपको एग्जांपल दिखाया. अगर मैं इसका मीडियन कैलकुलेट करूंगा दैट विल बी 3.5, और अगर मैं इसका मीन कैलकुलेट करूंगा दैट विल बी 609. Right? Now think of the opposite case. Let's say you have 100, 200, 300, 400 and 500. And यहाँ you have values minus 1000. Right? अब आप मुझे बताओ इस केस में क्या होगा? Which is the case of left skewness. What will be the case? Will mean be greater than median or median be greater than mean? Median will be greater than mean, right? Because if you calculate the median, it will be 350, but your mean will shift towards the negative value, right? Because there is a huge negative, on the lower end of the distribution. So for right skewed data, mean will always be greater than median. For left skewed data, mean will always be less than median, right? So that is what I've shown in the diagram also over here. Okay, so ये हो गया skewness. Then we talk about kurtosis. Then we talk about kurtosis. Kurtosis में क्या होता है? We are talking about a distribution which has a high peaking value, right? So for some values of x, there are lots of observations क्योंकि हम frequency measure कर रहे हैं. So for a range of values of x, there will be a huge number of values, right? So this could be an example of this could be, let's say 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. इस तरीके से अगर 1, 2, 3 के आसपास इसी रेंज में सारी वैल्यूज है तो ये काफी ज्यादा पीक कर जाएगा, राइट? ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं लेप्टोकर्टिक. Okay, which peaks a lot and then tapers off like a normal distribution. There is something called as platykurtic, which is more flat, right? So आप देख सकते हो कि जो distribution है, it is wide spread, right, over a huge value of x. Okay. Now, if I compare leptokurtic and platykurtic distributions, किसका standard deviation आपको लगता है ज्यादा होगा? प्रेरणा एंड प्रियंका, नो आंसर. लेप्टोकर्टिक का स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होगा या प्लेटिकर्टिक का स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होगा? क्या होगा मनीष? क्यों होगा प्लेटिकर्टिक का ज्यादा? एवरेज नहीं, मैं स्टैंडर्ड डिविएशन की बात कर रहा हूं. व्हाट डज स्टैंडर्ड डिविएशन मेजर? स्टैंडर्ड डिविएशन में जब हम यूज करते हैं क्वांटिटी, मीन या मीडियन से हम मेजर करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा, राइट? कि डेटा कहाँ पे है इन टर्म्स ऑफ, मतलब अगर एवरेज देखेंगे तो कैसे, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज हमें मेजर करना है तो हम मीन मीडियन मोड से करते हैं. स्टैंडर्ड डिविएशन क्या मेजर करता है? कोमल, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या मेजर करता है? स्टैंडर्ड डिविएशन क्या मेजर करता है? सिंपल सा क्वेश्चन. जैसे मीन सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या मेजर करता है? क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन? इट्स अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, राइट? तो
जब आप इस केस को कंपेयर करेंगे लेप्टोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक को, जब आप लेप्टोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक को देखेंगे तो किस केस में आपको डिस्पर्शन या स्प्रेड ज्यादा दिख रहा है? प्लेटिकर्टिक में, सेकंड केस में, राइट? तो नेचुरली किस केस में स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होगा? प्लेटिकर्टिक में, राइट? So a platicurtic distribution will always have a standard deviation greater than leptocurtic. Okay. Okay, take this down.
ओके, अच्छा कर रहे हो। Yeah. So what we'll do now is we have to do tests. Let me see what all we have to cover. Hypothesis testing, z-test, one-tailed, two-tailed. Okay, so we have to do tests. हम z test करेंगे. We'll do t test. ANOVA we have to do. And chi-square we have to do. Okay, so we cover that. Let's take a break. Anybody has questions online? Okay. Okay, we'll take a break and we'll start with hypothesis testing after that.
Okay, let's start with the hypothesis testing. Okay, so hypothesis testing basically is a technique that is used to validate assumption or a hypothesis given a certain evidence. Okay, what you have to do is basically you have to frame two parts of the hypothesis. One is called a null hypothesis, which is also denoted as HO or H naught. And then there is alternative hypothesis, which is opposite of what your null hypothesis is. Okay, so generally the most common use case of hypothesis testing is when you're validating whether a particular sample that you have drawn from a population is a good representative of that population or not. Okay, so let's say you have a population और उसमें से आपने कुछ sample draw किया. Now, when you draw the sample from the population, it has a mean of X bar. This one has a mean of mu. You need to determine whether mu is equal to X bar or not. अगर ये दोनों quantities equal होती हैं, then I can say that sample is a good representative of the population. That means जो मैंने sample draw किया है वो similar है to the population. Now the problem with this is that ये सिर्फ एक instance compare कर रहे हो, right? Mu और X bar का. But जब आप multiple instances को साथ में रखोगे, you need to see how close these mu and X bar lie with each other. तो अगर आप एक distribution plot कर रहे हैं, right? ये एक distribution है जो आपने sample किया है. This is the original, let's say, distribution. इस तरीके से अगर आप multiple samples लेते हो, तो what is the probability sort of that the sample that you have taken will be very close to the original population, right? That is what you're trying to determine using hypothesis testing. So this is the basic idea of it. Now, what you have to measure is basically, जब आप ये assumption validate कर रहे हो, mu equal to X bar, right? And you plot a graph of your population, assuming that your null hypothesis is true. And then you see where जो आपने sample लाया वो कहाँ lie करता है उसके अंदर, right? अगर वो sample mu के काफी close होगा, that means you can say that your sample is very close to the original population. Now इसका एक example करते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा clear होगा. So the example is basically where a neurologist is trying to trace the effect of drug on the response time of 100 rats, right? And he's administering them with 1 unit dose of drug, subjecting each to a neurological stimulus and recording its response time. The neurologist knows that the mean response time
of rats not injected with the drug is 1.2 seconds. The mean of 100 injected response time is 1.05 seconds. With a sample standard deviation of 0.5, do you think that the drug has an effect on the response time? So what I have to determine is that क्या जो drug है उससे कुछ change आ रहा है या नहीं, right, in the response. The basic idea is that the neurologist is trying to test a drug और ये drug का effectiveness वो response time के हिसाब से measure कर रहा है. Now the mean response time of rats not injected with the drug is 1.2 seconds. So ये आपका mean दिया गया आपको, right? Mu equal to 1.2 seconds for the whole population. The mean of 100 injected response time is mu x bar equal to 1.05 seconds. तो जिन ड्रग्स को दिया, जिन रैट्स को ये ड्रग दिया गया है, उनका रिस्पांस टाइम इज 1.05 seconds. Rats who have not been administered with the drug, their response time is 1.2 seconds. Now I can clearly see that there is a difference in the response time. But क्या ये statistically validated है या नहीं? क्या हम इसे statistically conclusive evidence बोल सकते हैं नहीं? That's something that I want to validate using my hypothesis testing. Okay, so मुझे यहाँ पे क्या क्या दिया है? सबसे पहले first step is to note down what you have been given. You have been given a population mean mu equal to 1.2 second. You have been given a sample mean 1.05, and you have also been given a standard deviation. तो जब आप hypothesis testing frame की null hypothesis frame करेंगे, तो you will say that okay, जो भी आप change लाने की कोशिश कर रहे हो, उस change से कुछ भी नहीं हो रहा है, right? So आप वो basically अगर आप वो drug administer भी कर रहे हो, the hypothesis that you'll frame is that that drug will not be effective, right? So you say that mean response time is 1.2 seconds only. It will not change. How do you frame your null hypothesis? Is basically by taking this idea only कि जो भी change या जो भी आप test कर रहे हो, वो test से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. It will stay the same, right? Whatever is the given scenario, it will stay the same and will not change. That is how you frame your null hypothesis. Your alternative hypothesis will be opposite of your null hypothesis. That which means that mu is not equal to 1.2 seconds. Okay. Now, once you have figured this out, the next step is to generate a distribution, right? Assuming that your null hypothesis is true. When you assume your null hypothesis to be true, you can simulate a distribution based on what has been given to you. So let's say that distribution is a normal distribution with mean mu equal to 1.2. ठीक है, so ये hypothetically हम एक distribution generate कर रहे हैं. अब इस distribution में जो हमने अपने null hypothesis को true मान के generate किया है, मुझे देखना है कि ये जो observation है 1.05 ये कहाँ fall करती है. Now from the rule of normal distribution, I know that my first standard deviation sigma 1 has 68% data. Okay, my second standard deviation has 95% data. And my third standard deviation has 99% of the data covered in it. (99.7%). Okay, now there is something called as level of significance for a test. There is something called as the level of significance for a test. That level of significance is basically, when you are talking about level of significance, generally for a test, if it is given, it will be either 90%, 95%, or 99.7%. ये आपके level of significance हो सकते हैं for a test. They talk about how robust your testing methodology is. So basically, जब मैं बोल रहा हूँ कि level of significance या confidence level है test का, तो it talks about let's say if I have a manufacturing unit that is producing 100 bulbs in an hour,
and I say that my confidence level is 95%. So the clearest and the simplest way to understand this is that only 5% of the products will be defective, and then 95% of the products will be right. 95% of bulbs that I'm producing will be right. Now, what I have to do is, if there is no level of significance given in the test, you assume that level of significance to be 95%. If there is nothing given in the test, generally it is given. या तो 90 होगा, या 95 होगा, या तो 99.7 होगा. Okay, now इस केस के लिए let's assume that it is 95%. ठीक है, let's assume that the level of significance is 95%. So उसके basis पे आप एक critical region establish करते हैं. This critical region will be 100 minus 95. That means 5. In terms of probability, this will be 0.05. Okay, so this critical region, this is the probability of the critical region. अगर इसके अंदर आपकी observation fall करती है, तो that means your null hypothesis is false. वहीं पे हम लोग ये बोलते हैं कि if P is less than 0.05, then you reject HO, and if P is greater than 0.05, you fail to reject HO. अब इसका मतलब क्या है? अब देखो, अगर मैं 95% level of significance की बात कर रहा हूँ, and let's say this is my second standard deviation. This is second standard deviation over here. So whatever outside of this second standard deviation, if I find that outside of the second standard deviation, whatever my observation is, which is here, so that means the chance of its occurrence is very low, right? क्योंकि 2 standard deviation के बाहर only 5% of the data occurs, right? So when I'm looking at that, if my observation is outside of second standard deviation, I can say that that observation की probability of occurrence is very low, right? Which means that your p value, जो भी आप compute करोगे, if it is less than 0.05, 0.05 is outside area, ये वाला area और ये वाला area combine करके 0.05 बनेगा, right? Because 95% of the data is covered within 2 standard deviations. So if you go outside of this area and your observation falls in this, that means जब आपने null hypothesis को true माना, उस टाइम पे ये observation काफी दूर आ रही है उस assumption से, right? It is not very close. If it would have been close somewhere over here, जो आप p value calculate कर रहे हैं, वो p value कहीं यहाँ पे आती, तो then I would have said that okay, you know, it is a very frequent occurrence and it will be very close to my original measurement of mu. But अगर ये इस second standard deviation के बाहर आ रही है, then I will say that the occurrence, the chance of this, the occurrence of this instance या जो भी measurement मैं कर रहा हूँ वो बहुत कम है, right? And the p value will always be less than 0.05 in this case if it falls in this region, right? क्योंकि ये threshold sigma 2 का जो threshold है कि 0.05 पे, and if I go into this region, then the p value will always obviously be less than 0.05, right? So whatever p value you compute, if that comes out to be less than 0.05, then you reject your HO. क्यों? क्योंकि जो आपने null hypothesis को true मान के ये distribution generate की थी, उस distribution में आपका जो observed statistic है वो 2 standard deviation के बाहर आ रहा है. That means उसका chance of occurrence बहुत कम है. इसीलिए आप अपने null hypothesis को reject कर देते हैं, क्योंकि वो obviously, you know, if it is outside of 2 standard deviations, you know, it will not agree with the hypothesis, null hypothesis that you have built, which will essentially result in rejecting your HO. On the other hand, अगर p का value greater than 0.05 आता है, let's say it comes out to be 0.5, then it falls somewhere in this region, which is inside of 2 standard deviations, right? Now, since it is falling inside 2 standard deviations, you can say that जो आपकी assumption है वो correct है, right? Because you assumed the null hypothesis to be true, you generated this normal distribution, and वो normal distribution में आपका observed statistic बहुत close आ रहा है to what your assumption is. So in that case, you will fail to reject HO. Because your HO is true, right? Whatever you assumed,
is actually true with respect to what has been given to you. Now, how is this whole procedure performed? So you start with your null hypothesis equal to 1.2 seconds. You frame your alternative hypothesis saying that it is not equal to 1.2 seconds. And then you calculate something called as a test statistic. So this one over here is called a test statistic. So z test के लिए हम z start compute करते हैं. This is given by mu minus x bar. Mu आपके पास दिया हुआ है, x bar भी आपके पास दिया हुआ है, and you divide that by sigma. You compute this mu minus x bar, and then you get a value. ये वैल्यू आपको टेबल में देखनी होती है और इसके अगेंस्ट p वैल्यू कंप्यूट करनी है, right? Once you look at the tabulated value, so let's say I am looking at 3, right? So ये 3 है, थ्री के अगेंस्ट 3.0 के अगेंस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, राइट? 3.0 के अगेंस्ट वैल्यू इज 0.9987. नाउ 0.9987 is the probability of this region. Let's say this is sigma 3, this is sigma 3. तो ये जो 9987 जो है ये प्रोबेबिलिटी इस रीजन की. अब अगर आपको इसको क्रिटिकल रीजन के साथ कंपेयर करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रीजन, ये वाला और ये वाला जो रीजन. So that can be found out by using 1 minus 0.9987. So this will be 0.0113. Correct? This will be the probability of these regions. And when you compare that with the probability of the critical region, which is 0.05, you see that this value 0.01 is less than 0.05, right? So इस केस में आप क्या करेंगे? Since this value, p value that you computed is less than 0.05 critical region, so what you do is reject HO, reject your null hypothesis. Okay, so eventually हम जब ये compute करके इसमें decision ले रहे हैं, when I am rejecting my null hypothesis, then I can say that the drug does not have a effect on the response time of the rats, because my null hypothesis, which was that mu equal to 1.2 seconds, is rejected. Basically, then I've accepted my alternative hypothesis. Rejecting your null hypothesis means that you accept your null hypothesis. So which essentially will mean that the drug does not have an effect on response time of rats. Because you rejected your null hypothesis, which said that mu is equals to 1.2 seconds. And you accepted your alternative hypothesis, which said that mu is not equal to 1.2 seconds. So that is what it is used to sort of understand. Okay, करते हैं example. Let's do this. एक चीज और मेरे को आपको बतानी है कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, राइट, द स्टैंडर्ड डिविएशन इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन. और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन जब आपको नहीं दी गई है तो आप वो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन में से एस्टिमेट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला सिग्मा एक्स बार, दैट मींस योर सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन. ओके, सो ये जो आपका ये है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा. This can be approximated using your sample standard deviation using the formula sigma, मतलब standard deviation for your sample divide by under root of total number of observations. Okay. All right. ठीक है. Let's do this. ये example करते हैं. Hello. Hello.
Hello, sir. Am I audible? No. Yes, you are audible. Yes, you are audible. I think sir is not able to hear my voice. Our null hypothesis is that there is no change in response time. Okay, we are assuming mu equal to 1.2 seconds, which was the mean response time for the population. Yes, we reject HO. Correct. That means the drug has a response effect on the response time. I rejected HO, right? P is greater than reject HO. P is less than 0. Drug does not Niagara. Drug does have an effect. Because we rejected our HO and we said that mu is not equal to 1.2 seconds. So drug does have an effect on the response time.
नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूंगा. Okay, इसको याद रखने का whether to reject or not to reject is a simple way. If P is low, null will go. If P is high, null will fly. Right? So basically the thing is that if P is less than 0.05, that means P is low, then you reject HO. If P is high, that means greater than 0.05, then you fail to reject HO. That means if P is high, null will fly. Fail to reject का मतलब हुआ कि आप accept कर रहे हैं null hypothesis.
So ये आपकी कैलकुलेशन है Z स्टैटिस्टिक की. Once you have done this calculation, you have to look for this value in the table. टेबल के अगेंस्ट जो p वैल्यू आएगी उसको आप कंपेयर करेंगे आपके क्रिटिकल रीजन के साथ और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ, and then take the decision on whether to reject or fail to reject HO. नहीं वैल्यू ग्रेटर कहाँ है? हाँ, it's less than ना, we calculated. See, p value is the value that you calculate against 0.9987. ठीक है? So वो p value जो है वो इस एरिया की प्रोबेबिलिटी. आपको कंपेयर करना है उसको with the critical region, which is this probability. तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 0.9987 आती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इन दो एरियाज? It will be 1 minus, right? Because the area under the curve is 1. So this probability will be 1 minus 0.9987, which is 0.01, less than 0.5. तो आप रिजेक्ट करेंगे HO.
Okay, now जो ये हम टेस्ट करते हैं, these tests can be one-tailed or two-tailed test. Okay. Now, when we are talking about a two-tailed test, तो वहां पे हमें ये इवैल्यूएट करना जरूरी है कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम दोनों क्रिटिकल रीजन्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट? दिस वन एज वेल एज दिस वन, राइट? इन दोनों के साथ जब आप कंपेयर कर रहे हो तो इसे हम टू टेल टेस्ट बोलते हैं. When you're comparing against both the critical regions. Now, there is also one-tail test. One-tail test में आप सिर्फ एक दोनों में से किसी एक रीजन के साथ कंपेयर करते हो. जब आप टू-टेल टी टेस्ट कर रहे हैं, यू आर कंपेयरिंग फॉर इक्वालिटी, राइट? जहां पे हमने बोला म्यू इक्वल टू 1.2 सेकेंड्स एंड म्यू नॉट इक्वल टू 1.2 सेकेंड्स, राइट? सो इसका मतलब ये है कि जो आपका मीन है वो या तो यहाँ पे भी लाई कर सकता है इस क्रिटिकल रीजन में या फिर इस क्रिटिकल रीजन में, दोनों जगह पे कहीं पे भी हो सकता है, राइट? दैट्स व्हाई यू रन अ टू टेल टेस्ट बिकॉज़ यू आर नॉट श्योर whether it will be greater than or whether it will be less than the response time, right? But when you're talking about a one tail test, you test for one side of things, right? So you will say that okay, mu is greater than 1.2 seconds and mu is less than or equal to 1.2 seconds. Right, so that means you're testing only for one region which is greater than 1.2 seconds, क्योंकि आप अपने null hypothesis को true मानते हो and you test only for the one side of the region which is 1.2 seconds. So वहां पे जब आप कर रहे हैं तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता है, कहीं चेंज नहीं आता है, but when you calculate the probability, अब आपने probability मान लो 0.9987 कैलकुलेट करें, ठीक है? That is the probability of this area, correct? क्रिटिकल रीजन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आप 0.9987 को माइनस करते हो 1 में से. सो दिस विल बी 0.00113, राइट? 0.01 मानते हैं. नाउ दिस 0.01 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दिस कंबाइंड. बट जब आप वन टेल टेस्ट कर रहे हैं एंड यू आर टेस्टिंग ओनली फॉर द ग्रेटर देन रीजन, इन दैट केस विल डिवाइड दिस प्रोबेबिलिटी बाय 2. So this will become 0.005. Further, it will become smaller. And again, the comparison remains the same. If P is less than 0.05, you reject HO. And if P is greater than 0.05, you fail to reject HO. Okay, so there are one-sided tests, there are two-sided tests. Two-sided test में आप दोनों साइड पे चेक कर रहे हैं, one-sided test में आप सिर्फ एक ही साइड पे चेक कर रहे हैं. अभी जो हमने पिछला वाला टेस्ट किया, न्यूरोलॉजिकल वाला जो टेस्ट किया हमने न्यूरोलॉजी का, वो जो टेस्ट था दैट वाज टू टेल टेस्ट, क्योंकि हम इक्वालिटी और अनइक्वालिटी पे खेल रहे हैं. नाउ दिस नेक्स्ट टेस्ट दैट वी विल डू इज अ वन टेल टेस्ट. So the question is, an insurance company is reviewing its current policy rates. We originally setting the rates, they believe that the average claim amount will be maximum 180 rupees, 1,80,000. They're concerned that the true mean is actually higher than this because they could potentially lose a lot of money. They randomly select 40 claims and calculate a sample mean of 1,95,000. Assuming that the standard deviation of the claims is 50,000, set alpha is equals to 0.05. Test to see if the insurance company should be concerned or not. तो इस केस में आपका पहले नल हाइपोथेसिस क्या आएगा? H नॉट क्या होगा इस केस में? आपको टेस्ट करना है कि कंपनी को कंसर्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो आप क्या मान के चलेंगे कंपनी को, जब आप नल हाइपोथेसिस फ्रेम कर रहे हैं तो कंपनी कंसर्न होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यू नेवर स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट के बाद क्या इफेक्ट होगा वो नहीं, आपको ये मानना चाहिए कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, right? That's what we assumed when we were doing that initial test also, neurology wala, right? So we will write that. Okay, these are the steps that are written down. पहले question note कर लो. Note down the question. We'll write down what has been given to us, and then we'll write down our null and alternative hypothesis.
Okay, आगे बढ़ते हैं. So when you're given a question like this, you have to first write down what is given in the question. ठीक है. तो इसमें जनरली आपको पॉपुलेशन मीन दिया होगा, सैंपल मीन दिया होगा, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन दिया होगा. You also have to write your null hypothesis and alternative hypothesis. Once you have done that, you have to compute a test statistic. In the previous test, we computed something called as Z statistic, which is given by the formula x minus mu upon sigma, right? Sigma x bar, which can also be written as x minus mu upon sigma under root of n. Okay, so this is so that you can approximate your standard deviation, sample standard deviation from your population standard deviation. This is your population standard deviation. This is sample standard deviation. Now, once you've done your calculated the t statistic, you have to look at the p-value using the table. So if it is a two-tailed test, then you subtract 1 from the p-value that you got from the table, compare that against your critical region, and then take a decision on whether to reject HO or fail to reject HO. One-tailed में आप क्या करेंगे? जैसे मैंने बताया, अगर आपका जो भी वैल्यू आ रहा है p वैल्यू 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे and then you divide that by 2 and then compare it with your critical region, which is alpha. So divide by 2 का logic clear है, right? Because you're now looking at only one side, so you need to divide the overall critical region probability by 2. ठीक है? Okay, ये क्वेश्चन करते हैं. ओके, सो मैंने आपको क्या बोला कि आपको स्टार्ट इस चीज से करना है कि जो भी आपका क्राइटेरिया है, राइट, वो क्राइटेरिया जो है दैट इज नॉट कॉजिंग एनी चेंज इन द सिस्टम, राइट. सो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि कंपनी विल नॉट बी कंसर्न, हेंस माय नल हाइपोथेसिस विल बी दैट म्यू इज लेस देन और इक्वल टू 1,80,000. ओके, एंड ऑल्टरनेटिव क्या होगा? म्यू इज ग्रेटर देन 1,80,000. नॉट इक्वल टू नहीं आएगा इस केस, क्योंकि आप या तो लेस देन के लिए टेस्ट कर रहे हैं या ग्रेटर देन के लिए टेस्ट कर रहे हैं. इक्वल टू नॉट इक्वल टू तब आता है जब आपको पता नहीं है कि लेस देन है या ग्रेटर. ओके, सो ये करते हैं एग्जांपल. लेट्स सॉल्व दिस. हमको क्या क्या दिया गया है यहाँ पे? वी हैव बीन गिवन म्यू व्हिच इज इक्वल टू 180,000. they have selected 40 claims and calculate a sample mean. So आपको 40 claims दिए है, n is equal to 40. Sample mean is given as x bar is given as 195,000. Standard deviation is given as 50,000. Okay, so आप कैलकुलेट करेंगे सेम फॉर्मूला यूज करके. लेट्स कैलकुलेट z स्टार्ट. सॉरी, ये x बार है, नॉट सिग्मा x बार. फॉर्मूला आपको यूज करना है म्यू माइनस x बार डिवाइड बाय सिग्मा अंडर रूट ऑफ n.
I have Deepavali. कितना है जी? सबका अलग है क्या? $195 minus 180, 15,000 divided by 50,000 divided by over 50. Correct answer is 1.89. We covered. Yes, yes, that is correct. Okay, 1.89. What is the p value? You can complicate it. Let me open the table here. यहाँ टेबल में देखो 1.89 की इसको वैल्यू तो कैसे करेंगे आप चेक 1.8 वैल्यू को 2.9 0.9706 ओके नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा 0.9706 के बाद 1 माइनस 0.9706 और वैल्यू 0.02 approximately 0.03 actually 0.03 0.03 को आपको क्या करना है डिवाइड बाय 2 करना है क्यों क्योंकि ये 1 पे टेस्ट अब तो वैल्यू आएगी 0.015 then you compare it with that p value sorry not p value but critical region is 0.05 0.015 is less than 0.05 you reject or reject correctly p value आया 0.015 after dividing by 2 alpha critical region property is 0.05 now क्या करोगे divided to the 0.015 so you reject the number the company should be considered 1.89 this will be the value जब आपने पाइथन में इसको देखा होगा इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ऑपरेटिंग वैल्यू just have to frame or run an automated hypothesis and use the right library okay
Yeah, guys. हो गया guys ये? ये हाँ, rows are these statistic value. Column is just a way to, जैसे कि आपको second decimal place तक नहीं दिया होगा, right? So 1 होगा, 1.1, 1.2. But अगर आपको third decimal place तक जाना है तो then you have to look at the columns. So जैसे हमारा 1 point कितना था, 86 आया था ना? So 1.8 में हम लोग 1.89 आया था. 1.8 तक गए, then we went to the last column, right? Because that's 0.09. 0.09 का probability आपको वहाँ मिलेगा.
Okay, so far we have done Z test. ठीक है, so Z test और T test जो है दो types के test हैं. T test is generally only employed when your sample size is less than 30, less than or equal to 30. If your sample size is greater than 30, then you employ something called as Z test. But दोनों का funda same है, right? What you do for Z test, you do similarly for T test as well. Okay, so देखो अगर आपके पास standard deviation known है, then I mean formula remains the same, right? जो मैंने आपको बताया था, आपके पास generally हमेशा sample standard deviation ही दिया होगा, क्योंकि population standard deviation estimate करना मुश्किल है, right? If you had been given that, then problem becomes really simple. So the formula remains the same, right? X minus mu जो हमारा Z टेस्ट का फॉर्मूला था वही हमारा T टेस्ट का भी फॉर्मूला है, बट T डिस्ट्रीब्यूशन is a different distribution. It is generally used when n is less than 30. Okay, n less than or equal to 30. So go with T distribution, T test or T distribution. If n is greater than 30, then you go with Z test. The formula is the same, x bar minus mu upon sigma under root of n. Right? This is the same formula. Let's look at the example. So example में हमें दिया है Violet Industry produces furniture for home and office use. The production engineer claims that the average of the furniture items produced is 30. Test his claim. पहले मुझे बताओ कि ये one sided है या two sided test? You guys don't answer. आप लोग बताइए one sided है या two sided? आंसर तो लिखा हुआ है, मगर if you are saying an answer, tell me why it is two sided. Violet Industry produces furniture for home and office use. The production engineer claims that the average number of furniture items produced is 30. Test his claim. तो क्या ये पहले one sided test होगा या two sided test होगा? आंसर आपके पास है. Think about why it is a two sided test. Why would this be a two sided test? Why? What is the difference between a one sided and a two sided test? क्या बताया मैंने अभी? I told you about it 5 minutes back. Difference between why do we do a one sided or two sided में क्या टेस्ट देते हैं बताओ? उसका क्या मतलब हुआ? जब आप एक साइड देख रहे हैं तो आप उसका क्या मतलब हुआ? सिंगल साइड. हाँ, that means you're checking for either greater than or या तो greater होगा या तो lower होगा, right? It cannot be on both sides. That is one sided. Two side में क्या करते हैं? Both side, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या वो greater होगा क्या वो less than होगा. I don't know about that, right? अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? The production engineer claims that the average number of furniture items produced is 30. Test his claim. अब उसके accordingly वो 30 है, but वो उससे ज्यादा भी हो सकता है, वो उससे कम भी हो सकता है, right? The number of average furniture that we'll produce may be more than that, may be less than that. तो मेरे को दोनों साइड पे टेस्ट करना पड़ेगा. I'll have to do a two side test. अगर बोला होता कि the production engineer claims that the average number of furniture items produced is greater than 30, then I would have done a one sided test. क्योंकि वो ये बोल रहा है कि 30 से ग्रेटर है, तो मुझे वही चेक करना है एक साइड पे कि 30 से ग्रेटर है या नहीं. यहाँ पे वो बोल रहा है कि वो 30 है, so it can be greater, it can be less. That's why we take a two sided test. करते हैं टेस्ट. The sample standard deviation has been given to you 33.3. Sorry, the average has been given.
So this is x bar, this is sigma x bar, and mu आपको दिया गया है 30. Null hypothesis पहले बताओ क्या होगी, h naught क्या होगा? Equal to O. Two-sided है तो equal to O, right? Okay, let's compute the test statistic. Then I will show the T table to T table on test statistic. Let me start with you. कितना आ रहा है? कोमल 1.336. तेजस, मनीष, कैलकुलेट करके बताओ कितना.
1.33. So I'll go with what majority is saying, 1.33. Check भी कर सकते हैं वैसे हम लोग. 1.26 है. So 1.33, 1.26. Maybe decimal points की वजह से थोड़ा change हो रहा है. Now we have to look at the T table. T statistic हमारे पास आ गया 1.33. We have to also calculate something called as degrees of freedom in this case. So degree of freedom is generally given by n minus 1. So इस case में वो 29 होगा, right? Because नहीं 29 है, sorry 9 होगा, right? क्योंकि n 10 है, right? Number of observations are 10, so your degree of freedom will be n minus 1, which is 9. Now let's look at T table. ओके ये आपका टी टेबल. अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा टी टेबल के अंदर इट्स अ बिट ट्रिकी टू फाइंड द वैल्यूज, बट आई विल टेल यू हाउ टू डू इट. Okay, now we know that how much is the t value we computed. 1.33. So let me write that down here. Okay, now degrees of freedom कितना है? DF is 9. So सबसे पहले आपको कॉलम में देखना है. कॉलम में आपको दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम. आप जाएंगे 9th रो पे, ठीक है. उसके बाद ये आपको देखना है ये वन टेल टेस्ट है या ये टू टेल टेस्ट है. ठीक है, ये हमारा टू टेल टेस्ट है, राइट. वी आर चेकिंग फॉर बोथ द साइंस ऑफ बोथ अबव एंड बिलो, राइट. So we'll go and see where 1.33 will likely fall. In what range will it fall? Okay, 7.8 greater 1.33, 1.33. So 1.33 will be somewhere between these two numbers. Correct? है ना? 1.33 will fall between this range. Now this range, if I'm talking about two-tailed test, is for 0.3 and 0.2. 0.3 or 0.2. That means your p value compute karoge, that will be somewhere between 0.3 and 0.2. Correct? Will it be greater than 0.05 or will it be less than 0.05? तो अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं, this will be always greater than 0.05, correct? Right? This value, जो भी value आए 0.3 और 0.2 के बीच में जो भी value आए, it will always be greater than 0.05. तो उस केस में मैं क्या करूंगा? You'll, since p is high, null will fly. तो आप क्या करेंगे? Null hypothesis को fail to reject करेंगे. Or in other words, you can say that you accept HO. देखो वैल्यू कितना आ रहा है? p वैल्यू 0.2368 आ रहा है, राइट. जब आप पाइथन से कंप्यूट करते हैं, which is what we also found out, that it will be between 0.2 and 0.3, right, which will always be greater than 0.05. So you take the decision that you will accept HO or fail to reject HO, right. So वो हमारा यहाँ पे भी आंसर आ रहा है. Hence we accept HO. Accept HO कभी नहीं बोलते हैं. The right terminology is fail to reject HO.
Observation 30. 10 observations. So that's why we did a t-test. Mean 30. Observations is 10. Any confusion till this point? Hypothesis testing का basic फंडा आपको समझ में आया. आप null hypothesis फ्रेम करते हैं, आप alternative hypothesis फ्रेम करते हैं, आप एक randomly null hypothesis को true मान के एक distribution generate करते हैं. उस distribution में आपका जो observed value वो कहाँ lie करता है, उसके basis पे आप decision लेते हो whether to reject or fail to reject your hypothesis, right? That is the broader framework. फिर आगे उसमें steps क्या है? पहला step है write down what has been given in terms of population mean, sample mean, sample standard deviation, then frame your HO, HA, then start with computing your test statistic, and then decide कि test statistic जो आपने compute कर लिया, तो उसके बाद आपको ये decide करना है. Basically ये decide तो आपको पहले ही करना है कि वो one tailed है या t-tailed है और two tailed test है. अगर one tailed test है, तो आप जो आपका p वैल्यू टेबल से आ रहा है उसको डिवाइड बाय 2 करके फिर कंपेयर करेंगे अल्फा के साथ, राइट? 0.05 या 0.01 या 0.1 डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 95%, देन द अल्फा विल बी 0.05. if the level of significance is 99%, then the alpha will be 0.01. if the level of significance is 90%, then alpha will be 0.1. ओके, तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो चेंज होता रहता है टेस्ट टू टेस्ट. इफ इट इज नॉट गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, अज्यूम इट टू बी 95%, राइट? 0.05 के साथ ही फिर आप कंपेयर करो. ओके, इस केस में हमें कुछ दिया था, इस केस में हमें नहीं दिया था कुछ, राइट? सो वी अज्यूम दैट इट इज 95%. पाइथन में 95 के साथ ही काम करता है. हाँ, क्योंकि आप लाइब्रेरी देखो ना कौन सा यूज कर रहे हो, टी टेस्ट वन सैंपल. वहां पे वो आपको फिर वो जो आप इंपोर्ट कर रहे हो लाइब्रेरी, वो वन टेल या टू टेल वाली वही होगी. जैसे ये वाली जो टी टेस्ट वन सैंपल है, इट्स फॉर टू टेल टेस्ट. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. हाँ, नल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि जो भी आप चेंज इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो वो चेंज काम नहीं करेगा. या जो भी कोई इंसान क्लेम कर रहा है, तो वो क्लेम जो है, मतलब अगर हाँ वो क्लेम जो है, अगर वो बोल रहा है कि 30 प्रोड्यूस करता है, तो हाँ ठीक है 30 प्रोड्यूस करता है, हम चेक करेंगे उसका. या अगर वो बोल रहा है कि ये ड्रग काम करेगा, तो हम बोलेंगे कि भाई ये ड्रग जो है, मतलब जो रिस्पॉन्स टाइम जो हमने एग्जाम्पल किया था, रिस्पॉन्स टाइम सेम है, ड्रग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो और वो चेंज जो है वो आपको मेजर करना है, क्या वो चेंज जो है वो सही है. तो यू गो विद व्हाटएवर इज द स्टेटस क्वो. इसको जनरली स्टेटस क्वो कहते हैं. तो बेसिकली कंफर्ट जोन में जो आपका है, आप वो वैल्यू को मान के नल हाइपोथेसिस. ठीक है, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. This is a Blaze Industry Private Limited claim that their manufacturer have a life of 45,000 hours. Test the claim at 5% level of significance. अब ये इसमें क्या होगा, आप मुझे बताओ जरा. वन साइडेड होगा या टू साइडेड होगा? क्यों? Have a life of 45,000 का मतलब है कि 45,000 उसका लाइफ है, उससे ज्यादा वो नहीं चलेगा. करेक्ट? अगर आप कोई बोल रहे हो कि 100 साल जिएगा कोई, तो आप ये थोड़ी चेक करोगे कि वो 100 साल से ज्यादा जिएगा या नहीं, राइट? आप ये देख रहे हो कि अगर इसका लाइफ 45,000 है, तो क्या वो 45,000 से पहले खराब होगा या नहीं, वो आपको चेक करना है. तो आपका नल हाइपोथेसिस विल बी दैट इट इज 45,000, बट यू विल हैव टू चेक फॉर द लोअर वैल्यू ऑफ 45,000, कि क्या 45,000 से कम उसका लाइफ है या नहीं, राइट? क्योंकि आप जब लाइफ की बात कर रहे हैं, तो यू विल ऑलवेज look for whether the person, the claim that they are making कि 45,000 है या नहीं, वो correct है या नहीं, right? So that is why your mu in this case will be 45,000 and alternative hypothesis will be less than 45,000. Formula and all, everything remains the same. Procedure remains the same. तो मैंने आपको x bar calculate करके दिया है. इसका x bar, which is the sample mean, is given by 41,113.33.
और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन इज दिस. सेम फॉर्मूला निकाल के टी स्टार्ट कंप्यूट करके पी वैल्यू बताओ कितना आएगा. एंड पी वैल्यू इस केस में आप पहले पी वैल्यू बताओ फिर पी वैल्यू को डिवाइड कर. ओके, वन साइड.
क्या है गाइस? टी स्टार्ट कितना आया? 2.27। पी वैल्यू कितना आया? टेबल में देखा आप लोगों ने? टू 2.25। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है? 14। ओके, ग्रेट। So let's look at our degrees of freedom here. 14 है degrees of freedom. And is it a one-tailed or is it a two-tailed test? It's a one-tailed test, right? Value कितना है? 2.27. Okay, let's look at this. So इस रेंज में आएगा, करेक्ट? तो वैल्यू कितना आ रहा है? 0.01 और 0.025 के बीच में, राइट? 0.1 एंड 0.025 के बीच में। तो क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे, फेल टू रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि p वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन 0.05, राइट? सो यू विल रिजेक्ट योर HO. That means the life of the bulbs is less than 45,000 hours. ओके, तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ रहा है बाय 2, राइट? क्योंकि वन सैंपल है। टेबल में जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास ऑलरेडी वन सैंपल का ही उसने कैलकुलेट करके दिया ना, बट यहाँ पे जो p वैल्यू आपका कंप्यूट करेगा वो 2 सैंपल के लिए करेगा। सो यू डिवाइड इट बाय 2 हियर, राइट? क्लियर है? ओके। ओके, अब टी टेस्ट में और जी टेस्ट में देयर आर 3 प्राइमरी टाइप ऑफ टेस्ट। वन इज वन सैंपल टी टेस्ट, जहां पे हमारे पास एक सैंपल दिया गया है, उस सैंपल के अगेंस्ट हमें टेस्ट करना है कि क्या वो सैंपल ट्रू पिक्चर बता रहा है हमें। या अदर इज अ टू सैंपल टी टेस्ट, जहां पे हमें 2 सैंपल्स के बीच में देखना है कि क्या वो आपस में सेम है या नहीं, राइट? पहला वाला जो यूज केस था उसमें मेरे पास पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन से सैंपल निकाला, मैंने ये देखा कि क्या वो पॉपुलेशन और सैंपल आपस में कोहेरेंट है, डू दे represent one another or not. That's a one sample t test or a z test depending on number of observations that you take. Then there is a two sample test. Two sample test में आपके पास 2 सैंपल दिए गए हैं, वो दोनों सैंपल जो है आपको कंपेयर करने हैं आपस में कि क्या वो दोनों सैंपल एक दूसरे के जैसे है या नहीं, राइट? तीसरा आता है पेयर टी टेस्ट, जिसमें आप बिफोर और आफ्टर करते हैं। सो आप क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, वो सैंपल के ऊपर कुछ टेस्ट, मतलब कुछ एक लेट्स से जैसे अगर आपको कोविड वैक्सीनेशन टेस्ट करना है तो आप पेशेंट्स लेंगे, पेशेंट्स के ऊपर कोविड वैक्सीन लगाएंगे और उसके बाद उनका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देखेंगे, राइट? सो दैट्स अ पेयर टी टेस्ट, राइट? वहां पे आपका जो ऑब्जर्वेशन सैंपल है वो सेम रहता है, बट उसका जो मेजरमेंट है वो चेंज होता है। दैट्स अ पेयर टी टेस्ट, जिसमें हम पेयर टी टेस्ट की बात कर रहे हैं। टू सैंपल टी टेस्ट में यू आर टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट सैंपल्स, ठीक है? यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है। सो द फॉर्मूला टू कंप्यूट द टी स्टैट इज गिवन बाय दिस। x is one sample, y is another sample, दोनों का मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड बाय s under root of 1 upon n1 plus 1 upon n2. n1 is the number of observations in sample number 1, n2 is the number of observations in sample number 2. Okay, degrees of freedom is n1 plus n2 minus 2. अगर एक सैंपल है तो it's just n1 minus 1. if it is two samples then it's n1 plus n2, दोनों के लिए -1 तो वो -2 बन जाएगा, राइट? सिंगल सैंपल के लिए DF is n-1, 2 सैंपल रहेंगे तो 2 सैंपल्स रहेंगे तो इट विल बी n1 - 1 plus n2 - 1, which will be equal to n1 plus n2 minus 2. ओके, ये फॉर्मूला नोट करते हैं एंड देन विल डू अ क्वेश्चन विद यू।
एक एग्जांपल करेंगे इसका, देन वी विल डू अ पेयर टी टेस्ट टुमारो ऑन सैटरडे, और फिर हम अनुभव और काइट पर टेस्ट, राइट, प्रॉपर्टी भी कैसे करते हैं, and we have to do that in class exercise. In class exercise, जो बाकी हमारे हैं हम करेंगे. Not sure how you are sitting. So we have checked now to make the unit. It's two different dimensions given, the data for gain and variance. It's not the component. दो डायरेक्ट एलिमेंट किए हैं और कैसे किया गया है वेट किया जाता है. यहाँ पे मैंने आपको दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन कंप्यूट करके दिया है. सो दिस यू सी ओवर हियर इज XA bar, this is XB bar, this is sigma XA bar, this is sigma XB bar. You have the formula, compute the t statistic. Tell me what the value is. Formula भी दिया है, x bar minus y bar, s upon 1 upon n1 bar. I don't know why 6.3. 12.81, right? So standard deviation for sample 2 is this. Null hypothesis होगा, there is no change. Right की वजह से कोई change नहीं है, is equal to zero. Alternative hypothesis will be that mean is not true.
कितना टी वैल्यू है? ओके, तो ये हमारा 2 सैंपल टी टेस्ट है. वी आर टेस्टिंग फॉर, क्या कर रहे हैं हम? 1 साइड कर रहे हैं या 2 साइड कर रहे हैं? इज इट अ 1 साइड टेस्ट और इज इट अ 2 साइड टेस्ट? 2 साइडेड है, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर इक्वालिटी और अनइक्वालिटी, राइट? आप बोल रहे हो या तो वो इक्वल है या तो वो नॉन इक्वल. सो लेट्स लुक एट द टेबल. .541 आया, राइट? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है? 18. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 18. ये रहा 18.541. कहां पे आएगा? ओके, इट्स अ 2 टेल टेस्ट, तो वी लुक एट दिस वन, राइट? इस रेंज में आएगा, करेक्ट? फॉल बिटवीन दिस रेंज. तो द वैल्यू विल बी व्हाट? 0.5 और 1 के बीच में वैल्यू होगी, which will always be greater than 0.05. तो आप क्या करेंगे इस केस में? Since p is greater than 0.05, you will, p is high, null will fly, so fail to reject HO. That means you accept HO, correct? Fail to reject का मतलब हो गया आप अपना null hypothesis accept करेंगे, which means that the diet is similar, right? Test whether 2 diets differ significantly. So the diets don't differ significantly, right? The weight increase in weight is totally attributed to the pigs and their metabolism. P value 0.51 आया, P value 0.6 आया, ठीक है. We failed to reject it. Okay. So we'll close it here today, guys. We have to do one more test in T, which is called a paired T test. Paired T test, और देखो अभी तक जो हमने Z और T टेस्ट किया है, इनमें अलग अलग वेरिएशन है. एक वेरिएशन होती है कि आप एक साइड पे चेक कर रहे हैं या दोनों साइडों पे चेक कर रहे हैं, एक वेरिएशन वो है. दूसरी वेरिएशन है कि जो आपको डेटा दिया है उसके बेसिस पे वेरिएशन जो आती है. पहली वेरिएशन होगी उसमें आपको एक पॉपुलेशन के बारे में कुछ बताया होगा, एक सैंपल के बारे में कुछ बताया होगा. आपको ये देखना है कि सैंपल और पॉपुलेशन में आपस में कितना मेल जोल है, हाउ मच आर दे बेसिकली इक्वल टू ईच अदर. दूसरा आता है 2 सैंपल टी टेस्ट, जहां पे आपके पास 2 सैंपल दिए हैं, वो दोनों सैंपल को आपस में कंपेयर करें. फिर तीसरा आता है पेड टी टेस्ट या पेड जी टेस्ट. उसमें आप लोग ये देखते हैं कि अगर मैंने एक ऑब्जर्वेशन ली है, उसमें कुछ ट्रीटमेंट किया, वो ट्रीटमेंट के बाद क्या इफेक्ट होता है. जैसे हमारा जो एग्जांपल है वो एक स्लीप वाला है, उसमें हम एक मेडिसिन टेस्ट करेंगे कि क्या वो मेडिसिन देने से किसी का स्लीप चेंज हो रहा है. तो उसमें हमने पहले एक ऑब्जर्वेशन, एक रीडिंग ली, एक सैंपल के लिए सेम पीपल को हमने एक मेडिसिन दिया और उसके बाद हमने वापस उनकी रीडिंग ली. तो बेसिकली दैट इज बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट. सो पेड टेस्ट जो होता है, कोई भी पेड टेस्ट में आप एक बिफोर एंड आफ्टर करते हैं. 2 सैंपल में अलग अलग सैंपल और 1 सैंपल में सिर्फ एक सैंपल के अगेंस्ट आप एक हाइपोथेसिस चेक करते हैं, जो भी आपने मतलब जो आप बिलीव कर रहे हैं वो ट्रू है या फॉल्स. ओके, so these are variations of Z and T test. We'll complete this in the next weekend. हाँ, ये वाला हाँ, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है. या तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. देखो, अगर आपको फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजिंग लगता है, वो डिवाइडेड बाय नहीं है, करेक्ट? इट्स इनटू, नहीं डिवाइडेड बाय नहीं है वो. या तो आप उसको दूसरा तरीका याद रखने का ये है कि आप उसे इस तरीके से लिखें. T stat is equal to x bar minus y bar divided by s1 square upon n1 plus
S2 या अगर S1 ही दिया है आपको, 2 दिया होगा ना स्टैंडर्ड डिविएशन, नहीं इस केस में आपको 2 स्टैंडर्ड डिविएशन दिए होंगे ना, तो आप इसको ऐसे कंप्यूट कर सकते हो S2 square upon n. This will give you a better better estimate of t value. हाँ, बट अगर आपको अलग अलग दिया है तो देन यू हैव टू सॉर्ट ऑफ यूज दिस फॉर्मूला. स्टैंडर्ड डिविएशन है वो, दैट ऐसे स्टैंडर्ड डिविएशन हो. पूल्ड का मतलब हो गया आप फिर दोनों का डिफरेंस कंप्यूट करके वो स्टैंडर्ड डिविएशन, right? But correct formula if you have been given 2 samples is to use sample standard deviation for both of them. अगर आप इसको pool करोगे तो then it becomes S. Otherwise in the formula it will stay like x bar minus y bar upon under root of S1 square upon N1 plus S2 square upon N. सारे नहीं तभी वो वैल्यू आई थिंक यू गॉट दैट रॉन्ग, राइट? फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला इज S1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन N2 का अंडर रूट और न्यूमरेटर में x बार माइनस y बार, जो डिफरेंस है दो मीन्स. Okay, so we will close it here today, guys. Anybody who has any questions online? Okay, so then we'll meet next weekend. Thank you. Bye-bye.